first of all, hello and welcome, future leaders, ladies and gentlemen, respected faculty members, and valued students. A warm welcome to another enlightening episode of GIBS IRE Talk series. I'm Professor Sandeep Bansali, and it's my pleasure today to host today's IRE Talk. Turning an idea into a thriving venture is a journey filled with opportunities, challenges, and transformative growth. And today we're going to discuss a topic from 0 to 1, the practicalities of starting and scaling a venture. We explore the critical steps and strategies that take a business earliest stages to sustain success. So this session basically dives into the nuts and bolts of the entrepreneurship, developing a solid foundation, identifying the scalable opportunities, building a strong team, and as well as the navigating the complexities of the business. Whether you are a budding entrepreneur or a startup enthusiast, or someone who's seeking to refine your business approach, gain actionable insights on how to make a leap from vision to reality, discover how to lay the groundwork, tackle obstacles, as well as scale your venture to the new heights. So before we get into the topic, let me explain you a little bit about GIBS. So GIBS Business School is based in Bangalore. We are an exclusive business school promoted and driven by the IIM alumni, offering a top-tier business education. Currently, we provide 2 flagship programs, the BBA from Bangalore University, as well as the AICTE-approved PGDM program. These courses are meticulously designed to equip the students with the necessary skills and knowledge to thrive in the business world. Our curriculum blends theoretical learning with a practical application, guided by the experienced faculties and industry experts. With the state-of-art facilities, corporate partnership, and strong placement cell, GIBS ensures all the students are very well prepared for their professional journeys. To speak a little about the IRE Talks, what is this IRE Talks all about? So GIBS IRE Talks is an initiative of GIBS Business School dedicated to enhance the student skills in innovation, research, and entrepreneurship. These talks provide a platform for all the students to interact with industry leaders, successful entrepreneurs, as well as the academic experts. The IRE framework encourages students to develop innovative ideas, conduct a significant research, and embark on the entrepreneurial journey. Through these engagements, students gain a lot of insights to build their professional network as well as boost their confidence and preparing them to excel in their careers and make an impactful contribution to the business world. And I would say I'm very, very excited since we have Mr. Kunal Bhardwaj with us, strategic leader, I would say, and he's the keynote speaker for today. Mr. Kunal has an wide experience of 17 plus years in startups and scale-ups, specializing in building businesses from 0 to 1. Currently the founder of Reevoy, a hyperlocal creator-led regional entertainment platform. Mr. Kunal previously ideated and scaled Dailylearn and EdTech platform for Tier 2, Tier 3 markets incubated by the Dailyhunt, where he also led a product and a content strategy with expertise in product development, growth, fundraising, as well as corporate strategies. He has led leadership roles at Testbook and Nimbus, a best-selling fiction author. He also combines a lot of creativity as well as a business acumen, redefining the strategies for emerging markets and driving impactful ventures. So, sir, we are really happy and privileged to have you with us today. So, I'm sure this session is going to be very, very power-packed for all of us to understand more on these startups as well as a lot of things about scaling the ventures. So, sir, over to you. Probably we can start. I mean, you can just take over, sir. Oh, sure. Thanks. First of all, a lot of thanks to you, Sandeep sir, and the entire GIBS team. All right. It's a privilege for me also to speak to the students. I've always tried that, when you have gained something, there should be a way to give it back to the people, right? And this is just, a way for me to give it back to the students. Hopefully, some of them after this may become entrepreneurs and very successful entrepreneurs. And that's the aim. And I'm not going to, keep it filled with jargons, right? This is going to be as much simplistic as possible. I believe students should not get lost into jargons, right? So there'll not be a lot of jargons. There'll not be something, which you will not be able to understand. I have tried to make it as much simple as possible. I have tried also to make it as much interactive as possible because, see, PowerPoint, when we were also kids, right, or students, we used to get bored with, a lot of theories and the teacher just endlessly talking about things. So the best of the talks are where there's a lot of interactions with the students, right? So I also urge each one of you
at any point of time, if you have any query, Sandeep sir, you can help me out with the questions being, put across. And we try to make it as much interactive as possible. Right. Yeah. So can you put this on a slideshow? Yes. Just a minute. So let me share my screen and then we start. I just hope the screen is visible to everyone. Yes. Yes, it's perfectly fine. Sure. So just to, give a little bit of background, already Sandeep sir has spoken about me. Close to 17 years of experience, and mostly it's been with startups, right? Typically, there is a phase called 0 to 1, and that's where I specialize, right? 0 to 1, exactly what is 0 to 1, right? When someone tells you that I have a very vague thought, maybe it could be just a one-liner, right? And from that one-liner, now you are developing an entire business, maybe 6 months, 1 year down the line. Now, from one line to, or just one problem statement to actually building an entire business itself, right? There's a lot of thought which goes. And I've just tried to bifurcate the scene that, if you come across any such one-liner, any such thought that, this is what I need to do, or this is what I see them, that's not happening, or it's broken. How do I fix it? So should you do it? Should you not do it? Right? What exactly it takes to build it into a proper venture? Right? What are the pros, cons? What are the loopholes? Right? What are the roadblocks you might come across? And and it's all based on my own practical experience. So it's not something very bookish. Sure. So let me take you through the very first thing. Why you want to start up? I mean, this is something which is very crucial for all of us. At times I ask people why you want to start up. There are people who actually start up for quick money. I mean that's fine. You are a student, or you are an entrepreneur, you are still struggling, and one fine day you dream that I'll have my own startup, I'll have some quick money on the way, right? But is that actually that easy? I'll come to that later. Or you want to become famous, I mean, there are a lot of startups where entrepreneurs are starting up just to get into the limelight, right? Just to get a little more media attention. But is that helping the startup? Again, I mean, that's a question. Or they feel that, I want to feel more powerful. I want to, have that sense of empowerment where 50 people, 100 people are reporting to me. There are VPs working under me. So is it to have that sort of a feeling? Again, or you want to start up because it's cool. Everyone wants to run a startup. You also want to run a startup, right? It's very cool. You speak to people that I'm a founder of XYG, and it sounds very nice to the ears. Or you are just doing it for the time pass. I mean, let's be honest about it. You are just doing it for the time pass. कि ठीक है करके देखते हैं. अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. Right? But the most important reason why people actually want to start up is that you have an itching for a problem. That problem is so strong in your head that you want to genuinely find a solution for it, right? I mean there are people for example, there was this startup where the person I just had this pitch in Eureka, right? The person had somebody from his family, he died. There was a farmer suicide, and there were a lot of farmer suicides in that area. That's Marathwada in Maharashtra. And then he thought to solve something about this. He thought that with my own personal experience, I have to do something. I have to build some solution which should be able to stop that, at least to a certain extent. Now when that person is starting up, right, that's a problem which he or she genuinely wants to solve. It's not just for the sake of doing. When see what happens in a startup, right? When you start something, it's not for 5 or 6 months. When you start something, ideally, when you start something, it should be something for the next 5 or 10 years. If you don't have an itching for a genuine problem, within 6 months, you will get bored. Within a year, maybe, you will start thinking about closing it off. And that's what exactly happens.
Out of 100 startups, hardly 1 or 2 startups survive. Rest 95, 98 startups gets closed down, right? The main reason is the same. I mean, it's not funding. It's more about, the demotivation. Beyond a point, they think that, let's get over it. Because that problem for them is not so strong that they want to actually, keep themselves engaged with it for next 5-10 years. So this is very important. Even before, going into the technicalities that how you need to start up. This is very important to understand that exactly why you want to start up. If you are actually starting up for 1, 2, 3, 4, 5 regions from the top, please don't do that. You can do it for the time pass. Maybe once you have some 15, 20 years experience and then you are bored with your corporate life, you have enough money to splurge. It's fine at that point of time. But when it's your very first startup, right? Point 1 to 5 will not make sense. Right. Hope it's clear so far. Anyone has any doubts or queries here? Yeah, someone has some, someone had raised the hand. In case any of the participants, if you would love to ask any of the questions, probably you can put it in the Q&A section. So I'll try to take up the questions. Sure. So let me move ahead. Now you have an idea, right? And that idea is great also. You have been able to find that, it's a genuine problem you want to solve. Now what next? That's the stage where a lot of people again face problem, which is validation of the idea. Right? The idea seems great on paper. You are very excited about it. And it happens with, a lot of startup founders also. When they go to actually raise funds, the VC outrightly rejects that. Right? Now why? Because, either that idea is not validated properly or the VCs, don't see a scale in that. Again, scale is also something which a lot of people, when they're starting up, they should think about. But again, a startup also is something where you need to think that, are you going to change 100 crore, 500 crore valuations? Or are you content or happy with, a solid business where you are doing 1, 2 crore, 5 crore kind of profits every year? Again, I mean, these are very two different set of people. These two set of people are not the same, right? So you should also think that, are you doing the startup only to raise funds? Then again, you fall back on these get famous or feel powerful zone, or you want to generally do business just for the sake of money, only to make quick money, then there are ways where you don't need to raise funds and still you will be profitable enough. So for example, a school, right? Now, if you open a school, let's say, or you open a B school, right? You earn revenues. But when you go to a VC that, now I want to open 100 B schools like that, the VC will not fund. Why? Because that's not scalable. Opening something physically and then scaling that up to 100 similar setups in next 3 or 5 years, that's next to impossible. So VCs look at scale, but that does not mean that, opening a B school or opening a school is a bad business. So funding and, startups, success of the startup are very two different things. Now it's become fashionable. You raise a fund, you typically is seen as successful. But both are two different things. And you need to understand which side of the startup, you want to build upon. Now, the idea is great, right? You want to validate it, but how exactly you need to validate? So very, very, very first thing, which I told previously also, that, are you willing to spend significant time on this without getting bored? See, it's like marriage, right? You are getting married with somebody. Now you don't get married in a hurry. I mean, now it's been happening more often where you want to test something called compatibility, right? now it's something similar here. You are also getting married to the idea for next 10 years. So if you just get bored in a year or two, then that's not the right startup idea for you. Again, is your problem statement actually that critical? A lot of time, what happens, we feel that I have faced this. So then everyone else will also be facing the same issue, which is not the case. If, it might be that you are just one of that 100 who faced a problem like this. Maybe the another 99 are not facing. Or, for the remaining, it's not that critical. Maybe it's very critical for you.
So it's always wise to understand that is the problem statement which you are trying to solve, is it critical enough? Will people pay for it? Right? I mean, you build a solution, for example, you just think that, let's make a toothpaste which is healthy, or let's make, some food product which is healthy. So you find it great, but is that actually people want, right? I mean, do people actually want healthy toothpaste, or they just want fresh toothpaste, they don't care about health at all? So that's something which you'll have to understand, right? And then only you have to start that up. Second is that, are there similar solutions existing? See, once you identify that, yes, the problem is actually critical, people want to actually buy it, then you will have to understand that, are there similar solutions existing? If there are already similar solutions existing, तो कोई आपकी product को खरीदेगा क्यों? And maybe they will buy also, but what will happen in that case? That आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपनी खुद की marketing के लिए. See, a product has to be different, right? It has to be differentiated from others. If it's not well differentiated, अब बायजूस है, राइट? बायजूस ने स्टार्ट किया, बायजूस के साथ साथ वैसे हजारों एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ यही थी कि दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो अगर हो सकता है इवन बायजूस वर ब्लीडिंग मनी टू अक्वायर कस्टमर्स. बायजूस एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए कम से कम 10,000 रुपए खर्च करता था. अब उस केस में बाकी कंपनीज को एटलीस्ट 12-15 हजार खर्च करने होंगे, बिकॉज दे आर कॉम्पिटिंग इन एन इवन लार्जर स्पेस, और कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. ठीक है, तो अगर सिमिलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर आप एग्जिस्ट क्यों करते हो? हो सकता है अगेन द आंसर कुड बी कि ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई एम इन द अदर जोन वेयर आई जस्ट वांट टू अर्न मनी एंड बी प्रॉफिटेबल. माइट बी द केस कि ठीक है, आप छोटे रहना चाहते हो, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली ओके ऑन यू, बट इट्स नॉट स्केलेबल, राइट? क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है. देन यू विल हैव टू फाइंड कि मैं बायजूस के अगेंस्ट खुद को कैसे पिच करूंगा. Again, it's not that people are not able to do that. There are many people who have been able to do. जैसे फिजिक्स वाला है. Now understand कि फिजिक्स वाला की जो I mean I'm from EdTech, so I take a lot of examples about EdTech, right? But फिजिक्स वाला की जो यूएसपी थी, वो यूएसपी प्राइसिंग नहीं थी. बहुत लोगों को लगती है कि वो प्राइसिंग इज द यूएसपी, बट इट्स नॉट प्राइसिंग एज द यूएसपी. सी, बायजू और फिजिक्स वाला बोथ आर टारगेटिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस ऑल टुगेदर. ठीक है, बायजूस जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा था और फिजिक्स वाला जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, वो ओवरलैप नहीं होते हैं. दो अलग इंडिविजुअल सेट्स हैं यूजर्स के. ठीक है, टियर 3-4 ऑडियंस टिल अ लॉट ऑफ टाइम वाज कंसीडर्ड कि इसको अभी टच ही नहीं करते हैं. पहले हम लोग मेट्रो ऑडियंस पे फोकस करते हैं, उनको बेचते हैं. मे बी एस्पायरिंग ऑडियंस पे फोकस करते हैं, पटना लखनऊ, बट उससे नीचे के शहरों में फोकस ही नहीं करते हैं. बट फिजिक्स वाला इज एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर दैट ऑडियंस. तो इट्स नॉट अबाउट प्राइसिंग, इट्स अबाउट टारगेटिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस एंड देन थिंकिंग कि हाँ, उनको क्या चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, और व्हाट विल वर्क बेटर फॉर देम, राइट? So taking the similar context, for example, when I was running a tech platform, again I was competing with Byju's. मैं भी compete कर रहा था फिजिक्स वाला से, बट हमारी भी ऑडियंस टियर 3-4 थी. पहला कि हम वेदांतु, अनअकैडमी और बायजूस की ऑडियंस से कॉम्पीट नहीं कर रहे थे. नाउ अगर हमारी ऑडियंस टियर 3-4 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, बायजूस का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना दिया, और उसको आप बेचने चले गए कि ये टियर 3-4 ऑडियंस को ही बिकेगी. ठीक है, बिकॉज उनकी यूज केस अलग होती है, उनका पूरा बिहेवियर अलग होता है. जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि व्हेन वी वेंट टू द स्टूडेंट्स इन बिहार, यूपी, टियर 3-4 एरियाज, राइट, द फर्स्ट थिंग विच वी शोड टू देम कि भाई आपकी ये एनालिटिक्स है, राइट? यहाँ पे बहुत ही डिटेल हमने एनालिटिक्स ग्राफ दिखाया है कि आपने कितना अच्छा किया, किस टॉपिक में आपने वीक किया, कैसे उसको ओवरकम करना है. नाउ ट्रस्ट मी, वी फेल्ट दैट इट्स ग्रेट, बट व्हेन वी वेंट टू द स्टूडेंट्स, उनके सर के ऊपर से चला गया. ठीक है, दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट दिस इज नॉट समथिंग विच प्रोबेबली दे आर गोइंग टू यूज. तो हम एक ऐसे फीचर पे काम कर रहे हैं जहां पे हम 10 घंटे 10 महीने लगाते हैं, और वो फीचर अल्टीमेटली यूजर यूज ही नहीं करने वाला है. तो उस फीचर का फायदा क्या है? रादर इफ यू स्पीक टू योर कस्टमर्स, राइट, देन यू फिगर आउट कि भाई, हमने फिगर आउट किया कि अगर उस ग्राफ को हम एक ऑडियो मैसेज में कन्वर्ट करते हैं और उनको एक ऑडियो मैसेज भेजते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, मतलब इट्स मोर लाइक कि
किसी ने उस कॉम्प्लेक्स ग्राफ को पढ़ लिया, उसकी एक समरी बनाई और उसके बाद उसको स्टूडेंट्स को भेजा. नाउ दैट मेक्स अ वे लॉट मोर सेंस फॉर द टियर 3-4 यूजर्स. अब उनको समझ में आ रहा है कि वो ग्राफ देख के जो खुद से नहीं समझ पा रहे थे वो उनको हम समझा के भेज रहे हैं. ठीक है. So again, you'll have to figure out the differentiation will also come when you speak to the customers, right? ऐसा नहीं है कि कितनी बार आपको पता नहीं होता है, बट आप कस्टमर से बात करोगे, जो मैंने आगे बताया भी है एग्जैक्टली. चौथा है कि मतलब हाउ दे आर डूइंग, हाउ यू डिफरेंट, सो विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड देन रीच आउट टू अ इनिशियल सेट ऑफ यूजर्स. सी, कितनी बार होता है ना कि वंस वी आइडेंटिफाई अ आइडिया, सबसे पहला काम हम करते हैं कि एक साइट बना लो, ऐप बना लो. App, site, everything, just keep aside. Your first thing should be to speak to the first initial set of users. 5 यूजर, 10 यूजर, 20 यूजर, 50 यूजर, जितने भी यूजर्स आप ढूंढ सकते हो अपने लोकेलिटी में, अपने फैमिली में, अपने नेटवर्क्स में. यू शुड ऑलवेज डू दैट. सी व्हाट हैपेंस एट टाइम्स, जब आप स्टार्ट करते हो ना, इट्स लाइक राइटिंग. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अ स्टोरी, यू थिंक समथिंग एल्स. बट जैसे जैसे आप लिखते जाते हो ना, तो यू जो आपने शुरुआत की थी वहां से आप कहीं और पहुंच चुके होते हो. ठीक है. एंड इट हैपेंस इवन इन टॉक्स आल्सो, राइट? पीपल स्टार्ट विद समथिंग एल्स, व्हेन दे एंड दे रीच समवेयर एल्स. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इनिशियल सेट ऑफ यूजर्स. जब आप उनसे बात करोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? दैट हाउ एग्जैक्टली दीज यूजर्स आर रिएक्टिंग. आई मीन, हाउ, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यूजर से बात नहीं की होती तो हमें वो पता नहीं चलता कि ये ग्राफ का कोई उनके लिए मतलब ही नहीं है. Right? तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट. 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी हो, बट एक्चुअल यूजर्स यू स्पीक, यू गेट अ लॉट मोर क्लैरिटी कि आपको बनाना क्या है. और आप सब कुछ एक साथ नहीं बना सकते हो, वो मैं ऑलरेडी आ रहा हूं. आप सब कुछ एक साथ नहीं बना सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से एक स्टार्ट करनी पड़ती है, राइट? तो that's where I'm coming next is, once you talk to your users, once you understand, you get more clarity, तो सबसे पहली चीज जो आती है स्टार्टअप में, वो आती है आपको एक एमवीपी बनाना है, which we call, it's the full form is minimum viable product. अब बहुत लोगों के लिए होता है ना कि एमवीपी का मतलब कि ठीक है, मैंने पहले वेबसाइट का 30% बना दिया, फिर उसका 50% बना दिया, which is like, the image one, which is not MVP. MVP is actually a fully functional product. और एमवीपी का मतलब अगेन ऐप या वेबसाइट ही नहीं है. एक सिंपल एक्सेल शीट भी आपकी एमवीपी हो सकती है, राइट? अगर अगर आप स्कूल चला रहे हो, तो हो सकता है कि आपने जो शुरुआत के 5-10 बच्चों को अपने घर में पढ़ाया है ना, वो भी एक एमवीपी है. बिकॉज आपने उन बच्चों को घर में पढ़ाया, आपने समझा कि उन बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद उन फीचर्स को ज्यादा हाईलाइट करके आपने एक प्रॉपर स्कूल खोल लिया. देन दैट्स ऑल्सो एमवीपी फॉर यू. ठीक है. तो लाइक यू सी इन द सेकंड इमेज, राइट? एमवीपी में वो बिल्कुल पहले आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे कि वो चल पाए, सॉरी, चल नहीं पाए, एटलीस्ट विदाउट यूजिंग द फीट द पर्सन कैन मूव. Second, maybe now he can move, with a better control. Now he is moving without using the feet on bicycle. Then he's using a motorized bicycle or motorcycle, and then finally he's using a car. But that's the kind of MVP progression which you should think about in your entire product life cycle. ठीक है. तो पहले ऐसा नहीं हो कि एक चक्का बना दिया आधा, उसके बाद से दूसरा चक्का. बिकॉज आप देखोगे इन दोनों इमेज में, तो पहले वाले इमेज में जब तक आपका स्टेज 4 तक नहीं पहुंचता है, तब तक आप प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो कोई फायदा ही नहीं है, मतलब आपको कोई फीडबैक मिला नहीं. दूसरे वाले में क्या है ना कि जब इमेज 1 में हो, तब भी लोग यूज कर रहे हैं. हो सकता है कि 100 लोग यूज नहीं कर रहे हैं, 5 लोग यूज कर रहे हैं जो ज्यादा एक्साइटेड है आपके प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो 5 आपको फीडबैक दे रहे हैं. आप उस फीडबैक को इंप्रूव करके आप इमेज 2 तक आ रहे हो. वहां पे अब हो सकता है कि 5 के बदले 10 लोग आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा इंप्रूव हो गया है प्रोडक्ट. फिर आप स्टेज 3 पे आओगे, वहां पे आपके पास 20-50 लोग आ जाएंगे. तो ऐसे कर कर देन यू विल फाइनली मूव टू स्टेज 5. So again, like I told you, MVP is not necessarily an app or website. It's not. That's a misconception कि MVP का मतलब हो गया कि मुझे साइट और वेबसाइट ऐप बनानी ही है, राइट? हाँ, ये है कि इट मस्ट बी फुली फंक्शनल एंड टू एंड. जो भी आपका यूज केस, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो एंड टू एंड आप पढ़ा रहे हो, वो फुली फंक्शनल होना चाहिए. उसको आप घर में पढ़ा रहे हो, उसको आप ऑनलाइन जूम पे पढ़ा रहे हो, उसको आप कैसे ही पढ़ा रहे हो, बट नॉट नेसेसरली वेबसाइट और ऐप, बट फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए. आप उसको टेस्ट भी दे रहे हो, तो वो टेस्ट शुरुआत में हो सकता है कि इट्स नॉट
इनबिल्ट इन योर वेबसाइट, आप उसको टेस्ट अलग से भेज रहे हो, स्टडी नोट्स पीडीएफ में भेज रहे हो, विच इज फाइन, दैट्स अ एमवीपी, इट्स स्टिल फुल्ली फंक्शनल, स्टूडेंट का कोई भी जर्नी ब्रेक नहीं कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ, टेस्ट हम बाद में, अभी ये ऐप अभी बना रहे हैं उसके बाद टेस्ट दिलवाएंगे और स्टडी नोट्स भी बाद में दिलवाएंगे, तो देन दैट्स नॉट एमवीपी। आई मीन एमवीपी मोर देन अ प्रोडक्ट, मोर देन समथिंग टू सेल टू समबडी। होता क्या है ना कि व्हेन यू बिल्ड एन एमवीपी यू थिंक कि यही मेरा प्रोडक्ट है, इसी को मुझे ले जाकर और अपने कस्टमर को बेचना है, विच इज नॉट द केस। आइडली लोग एमवीपी बनाते हैं बिकॉज इट्स अ टूल टू गैदर अर्ली फीडबैक, अर्ली यूजर फीडबैक। यूजर फीडबैक देगा, जब तक आप स्टेज 1 में फीडबैक नहीं लोगे आप स्टेज 2 में पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है, आप स्टेज 1 से सीधा स्टेज 5 में नहीं जा सकते हो। तो यूजर फीडबैक देगा, आप उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करोगे, फिर उसको इटरेट करोगे, क्योंकि ऐसे भी आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है, राइट। तो आप इटरेट करोगे, फिर स्टेज 2 में जाओगे। आप डायरेक्टली उसको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एमवीपी नहीं बनाते हो, आप एमवीपी को बनाते हो कि मेरा प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव हो, यूजर फीडबैक मिले और लगातार इंप्रूव हो, ताकि एक ऐसा प्रोडक्ट में बने जो मे बी मेजर कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करे। ना आपने एमवीपी तो बना लिया, बट उसके बाद जो फेज आता है ना वो बहुत क्रिटिकल है, विच इज योर टीम बिल्डिंग, राइट। एंड टीम बिल्डिंग, दैट्स व्हाट आई टोल्ड इन द बिगनिंग आल्सो, इट्स लाइक मैरिज। आई मीन आपको बहुत सोचना होगा कि क्या आपका जो को फाउंडर है या आपके साथ जो है, आप उसका चेहरा रोज सुबह उठकर देखना चाहोगे? अगर अगर वो कोई ऐसा है जिसका आप चेहरा ही नहीं देखना चाहते हो, तो नो मैटर हाउ टैलेंटेड दैट पर्सन इज, माय एडवाइस इज कि उसके साथ फिर आप काम मत करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड दैट रैपो, राइट। आपको 5 साल उस बंदे का रोज चेहरा देखना है, आपको उससे बात करनी है। अगर somebody, you are not getting the good vibes for example, not worth doing it, not no matter कि वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, क्योंकि फिर वो आप दोनों एक साथ एक गोल को लेकर आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, so pick people number one with complementary skills. If you are good in sales or business, pick somebody good in tech. If you are good in tech, and someone is good in sales or business, pick somebody who is good in product. But pick people, or at least get people who are complementing you. ऐसा नहीं है कि 5 लोग बिजनेस वाले हैं और उन्होंने बनाना स्टार्ट किया एंड नाउ दे आर फाइटिंग कि नहीं मैं सीईओ बनूंगा, मैं सीबीओ बनूंगा, मैं ऑपरेशंस देखूंगा। दैट हैपेंस, राइट। एंड एनी विच वेज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज अभी ऐप वेबसाइट बनाने वाला कोई है ही नहीं और लोग झगड़ रहे हैं, which happens in the initial stage with a lot of startups, lot of student startups especially. Like I told you, right, it's like marrying somebody. So अगर आप उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हो, it's not worth, क्योंकि एक तो वो अलाइनमेंट नहीं बनेगी, और दूसरा आप किसी ऐसे का चेहरा देखते हो जिसका चेहरा आपको पसंद नहीं है, तो ट्रस्ट मी पूरे दिन के लिए आपका मूड खराब होगा, और यू विल नॉट बी एबल टू गिव द काइंड ऑफ फोकस विच द स्टार्टअप रिक्वायर्स। इट हैपेंस। एंड कन्फ्लिक्ट, राइट, दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना कि जब 4-5 लोग कोई आइडिया पसंद करते हैं तो बोलते हैं कि चलो इस पे काम करते हैं, काम कर लेते हैं, स्टार्ट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब 6 महीने साल भर बाद, बिकॉज उनकी कोई क्लैरिटी नहीं थी, उन्होंने बस स्टार्ट कर दिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, बस स्टार्ट कर दिया, राइट। क्लैरिटी नहीं थी। अब कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सपोज करो कि आपने 5 लोगों के साथ स्टार्ट किया, आपस में डिसाइड किया कि सब लोग 20-20% शेयर रखेंगे। ठीक है, और उस 5 में से 3 लोगों ने 6 महीने के बाद छोड़ दिया, लेकिन चूंकि आपने स्टार्ट किया था, शेयर दे दिया था, कोई ऐसी क्लैरिटी थी नहीं, तो कल को आपकी स्टार्टअप ग्रो भी करती है तो भी आपने अपनी 40% इक्विटी ऐसे ही वेस्ट कर दी है, जो आज भी उन दोनों के पास पड़ी हुई है, कोई काम नहीं किया उन्होंने, बट स्टिल they have that and you cannot you can't take it away, right? So it's very important to have that clarity, it's very important to have that documentation in the beginning. कितनी बार होता है कि अच्छा हम ये को फाउंडर अग्रीमेंट बोलते हैं, तो वो को फाउंडर अग्रीमेंट कैसे करें, दोस्त हैं, बुरा लगेगा, बट आज जो बुरा लगेगा साल भर बाद जो होगा वो ज्यादा बुरा लगेगा। तो it's important to avoid conflicts, it's important to be transparent, it's important to have that documentation as early as possible, and then that will help you out. And lastly, see, you like I told you, once you have the MVP then you have to iterate, you have to reiterate, आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है,
you will have to again improve that user feedback loge. That's where the scaling piece comes. See, till this point, you are actually building something, right? But जब आप act कर रहे हो fast, iterate कर रहे हो, reiterate कर रहे हो, that's where you are scaling things. For example, again taking cues from EdTech, White Hat Junior जब आया, ठीक है, तो it's see they were not clear कि coding को लोग कैसे लेंगे. But then they realized कि अच्छा, हम wolf whatever that name was, right? Some wolf sukla or something, right? So that kind of advertisement actually gives us a lot of clicks, and not just clicks, it's giving us a lot of conversions also. So then they realized कि yes, this is something which can be actually played upon to scale. तो उसको थोड़ा और improve करते हैं, थोड़ा और कहानियां बनाते हैं नई नई, right? But you will have to act fast because the market is moving. See, आप सोच रहे हो कि मैं वो 2 दिन बाद कर लूंगा, 2 दिन में मार्केट इज मूविंग, मार्केट इज नॉट वेटिंग फॉर यू, राइट? इट्स इवॉल्विंग डेली. ट्रस्ट मी, एटलीस्ट आप जो आइडिया सोच रहे हो, सेम आइडिया कम से कम 1000 लोग उसी टाइम पे सोच रहे होंगे. इट्स नॉट दैट आपकी कितनी भी यूनिक आइडिया क्यों ना हो, इट्स नॉट दैट यू आर ओनली द वन हु इज थिंकिंग अबाउट दैट आइडिया. देयर आर लॉट पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट द सेम. तो आप अगर 2 दिन 10 दिन 20 दिन डिले करोगे, कोई और लेके चला जाएगा वहां पे. एंड नॉट जस्ट आइडियाज, इवन टेक्नोलॉजीज कीप चेंजिंग. तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई टेक्नोलॉजी सोची और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलीट हो गई. नाउ फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा भी है कि अलार्म क्लॉक, राइट? अलार्म क्लॉक में किसी ने एक दिन सोचा होगा कि ठीक है, मैं कुछ और इनोवेशन करता हूँ. मे बी अलार्म क्लॉक में अभी तक वो केवल ट्रिंग ट्रिंग बजती थी, इसमें मैं ह्यूमन वॉइस को भी ऐड कर देता हूं. जब तक वो ह्यूमन वॉइस ऐड करने की सोच रहा है, तब तक स्मार्टफोन आ गया और उसको पता भी नहीं चला कि कब उसका पूरा का पूरा अलार्म क्लॉक का बिजनेस चला गया, राइट? तो इट कैन नॉट वेट फॉर यू. it will keep on evolving, and you will have to race against time. तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग, व्हेन योर एमवीपी इज रेडी. जब यूजर्स 10 5 50 यूजर्स आ रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस 50 यूजर्स के फीडबैक को लेकर आप उस 50 के बाद 500 तक पहुंचो, 500 का फीडबैक लेकर 500 के बाद 5000 10,000 तक पहुंचो. आप बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना कि एक बार एमवीपी बन गई तो दे थिंक कि मैं अचानक से इस 50 यूजर्स के बाद सीधा 5 लाख यूजर्स को अक्वायर कर लेता हूं. बट दैट ऑल्सो बैकफायर्स बिकॉज यू आर स्टिल इन दैट फेज जहां पे आप इवॉल्व कर रहे हो. आपका प्रोडक्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी भी उसमें बहुत सारी कमी है. और किसी को वो कमी देखेगी तो वो क्या करेगा? अगर आपने ऐप बनाया हुआ है तो सबसे पहले ऐप पे आकर आपको 1 स्टार देगा, कुछ कमेंट देगा, कुछ बहुत गंदे रिव्यूज देगा. तो बिफोर इवन योर बिजनेस कुड टेक ऑफ, यू आर गॉन, राइट? वंस योर रेपुटेशन इज लॉस्ट, यू आर लॉस्ट. तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्केल स्लोली in phase wise manner, right? Not exactly, it's not a race. तो वो एक्ट फास्ट इज नॉट कि आप उसी प्रोडक्ट पे 5 लाख यूजर 10 लाख यूजर तक पहुंच जाओ और उसके बाद बोलो कि अब मैं फेल हो गया. एक्ट फास्ट मीन्स दैट वॉट एवर सिग्नल्स योर यूजर्स आर गिविंग, एटलीस्ट उन सिग्नल्स को पकड़ के आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहो और उसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करो, राइट? अभी I just thought, that before winding up, I'll just give you some examples. Now these were the 3 platforms which was built by me in the past, right? And these were exactly one-liners or just one thought, vague thought, and from there we build it into businesses. Now, see, Dailyhunt Exam Prep, the first example. Now I come from a very small town in Bihar. I have seen people struggling to get their government jobs. Unlike other states, right? In Bihar, government jobs, that's the primary source of job for people. I mean, they aspire to become even a peon, for example. That's so I have seen that the people struggle. I mean, there were examples where people had to travel by train to their nearest cities to buy books. At least way back in 2008 2010, that was the case because good book shops were in Patna and not exactly in any other small town. And people will actually travel from train or bus and just go to Patna only to buy a book. And it's not that people were not laborious, right? I mean, they were working very hard, they were studying very hard,
They would actually read those books. They would actually, study in night under lamps. And they make actually effort to actually, crack a government job. Now, the scale is huge, the volume is huge, but the major challenge is that are they willing to pay? When you start thinking about a solution, कि ये problem है, but are they willing to pay? क्या वो जो 150-200 की किताब ले रहे हैं, if you build something, right, will they be paying for it? So when we figured out that उनको ज़्यादा trust है, उनको उन किताबों पे ज़्यादा trust है. Of course, rather than having some Kunal publications or some Kunal app, they would rather believe a Pratyogita Darpan, for example, right? Because that's what they have actually studied or known throughout. So that's something which was very clear कि हम अपना कोई भी content बना देंगे, ये लोग नहीं खरीदेंगे, at least in at that point of time. And the other way out was कि हम प्रतियोगिता दर्पण के पास जाएं, जो कि अभी ऑफलाइन किताबें बेचते हैं, और उनको बोले कि आपका कंटेंट हम डिजिटाइज करके बेचेंगे. So that makes more sense for us, and that's what we did. We reached out to publishers like Arihant Publication, Upkar Prakashan, Pratyogita Darpan, right? All these publishers, S. Chan, and we started digitizing their content and then creating, a different SKUs. So, for example, Arihant just had books, right? But they were not having their own test series at that point of time. We digitized their content. We created test series on our platform. Now that makes sense because for people, they are still buying the test series of Arihant. Though they are using it on Dailyhunt Exam Prep, but they are still buying the test series of Arihant. They are buying the, study notes of maybe Pratyogita Darpan or Upkar Prakashan. So that worked. I mean, trust me, way back in 2015-16, when we started this, at one point of time, we were having close to 1 lakh new users coming on the app every day. And almost 1,000 people were buying something or the other from us. So if you look at it 9 years back, 8-9 years back, that was still quite decent because उस वक्त ना जियो था, ना UPI payment थी, ठीक है? तो payment itself was a major issue. Connectivity was also a major issue. 4G भी नहीं था, 3G was, at best. So there were a lot of challenges for people, but still, that made sense for them. Similarly, like I already told you, Dailylearn में, the biggest learning for us was कि student जो चाहता है उसको वो दो. हम जो अपने दिमाग में सोच के आते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसको ग्राफिकल इंटरफेस देंगे और वो वाह वाह करके ताली बजाएगा, ऐसा होता नहीं है. It's something which you think in your mind, but when you meet and speak with a customer, it's something completely different. So we had our own learnings, in Dailylearn as well. So again, it's very important for you in the initial phase to have words with your customers, words with your potential customer. And it's important, that you exactly talk to the target audience. अगर आप tier 3-4 के लिए बना रहे हो और आप बोलते हो कि मैंने 20 बैंगलोर के XYG स्कूल के बच्चे से बात कर ली है और अब मैं बना रहा हूँ, then it will not work because the audience with whom we have spoken and the actual product for whom you are building both are two different set of entities. Right. So now here I end this session, and I just hope it made sense to you. Right. Absolutely. I've tried to be, as much simple as possible. Very, very, very jargon free. No, indeed it was, I would say, sir. I would say it was indeed very, very simple. So there are a lot of questions which our audience have asked. To start with the first of them, that what are the key indicators that business is ready to scale? See, the very early key indicator is when a lot of users are using your product. So for example, you have, again, and then pardon me, most of the examples are EdTech, but you created a study note, for example, just a PDF. And that PDF is actually working on its own. All of a sudden you find कि आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड किया था और हर जगह वही PDF फॉरवर्ड हो रही है. 1000 लोग उस PDF को फॉरवर्ड कर चुके हैं. That's a sign for you that your product is working. Right? It's working. Because your content has something which is resonating with the audience. So it's more about how the users are using it, and it's not about whether the users are buying it or not. Buying it is a different thing altogether. But the early, and that's why when you go to raise a fund,
VCs always focus on growth, right? Because growth is something which they see how the user is growing. What is the virality quotient in your content or in your product? तो वो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, और वो जरूरी नहीं है कि वो ऐप के यूजर्स हो वही है. लाइक आई टोल्ड यू, स्टडी नोट्स को भी अगर लोग यूज कर रहे हैं तो दैट्स अ गुड इंडिकेटर फॉर यू. Good indicator. Thank you so much for that. So the next question is, what are the most common mistakes founders make during the ideation phase? See, coming back to this, I already tried to tell this. See, when you are at the ideation stage, it's very important that to know that is your problem actually critical for your user. I mean, we think हम एक बहुत ही अच्छा सा फंकी सा वेबसाइट बना देंगे, ऐप बना देंगे. अभी फॉर एग्जांपल आई मेट समबडी हु सेड कि हम इंडिया का किंडल बना रहे हैं. नाउ इंडिया का किंडल बना रहे हैं, ई बुक्स की एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं, विच इज फाइन, बट इज दैट एक्चुअली क्रिटिकल फॉर यूजर, राइट? क्या वो किंडल सॉल्व नहीं कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो क्या हम किंडल से कॉम्पीट कर सकते हैं? अगर अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बिकॉज प्राइस इज नॉट द आंसर. आई मीन लॉट ऑफ टाइम पीपल से कि हम उससे सस्ता देंगे, विच इज नॉट द आंसर. आई मीन प्राइस, आप किंडल अगर 1,000 रुपए में दे रहा है तो आप उसको 500 रुपए में नहीं दे सकते हो. आप कोशिश भी कर लोगे ना तो भी नहीं दे सकते हो, बिकॉज True. Kindle is playing at a different level, and trust me, to play at the same level and offer it at half the price of Kindle, you will be bankrupt maybe in 6 months. ठीक है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है. अगेन अलग अलग चैलेंज होते हैं. जैसे ये किंडल का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैंने उसको सबसे पहले बोला कि ठीक है, आप देखो लोग किताब क्यों खरीदते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में जब तक, और वही चीज अभी क्विक कॉमर्स में है कि जब तक आप दुकान पे जाओगे उसको खरीद के लाओगे, पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस, तो दे थिंक कि ठीक है हम ऑनलाइन ले लेते हैं. तो वो ऑनलाइन पेशेंस नहीं है, वो ऑनलाइन ले रहे हैं, तो विच काइंड ऑफ बुक्स दे बाय? दे पर्टिकुलरली बाय द बुक्स विच आर फ्रेश, विच आर सेलिंग वेल, विच आर द बेस्ट सेलर्स. नाउ थिंक ऑफ इट, क्या बेस्ट सेलर्स जो हैं, जो जिनकी नंबर्स में बिक रही है बुक्स, will they be partnering with a completely new entity just like that, right? And giving their books to you? No, they will not. Kindle को नहीं देते हैं वो, क्योंकि उनकी ऑफलाइन बुक्स की सेल डिसरप्ट हो जाएगी, तो वो किंडल को भी नहीं देते हैं एट टाइम्स. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, आपके पास फ्रेश किताबें रहेंगी नहीं, बेस्ट सेलर्स रहेंगे नहीं. तो पुरानी किताबों को पढ़ने के लिए इंटरनेट पे भी चले जाओगे तो बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी, राइट? तो व्हाट्स द यूज ऑफ इट? सो वैलिडेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि क्या वो इतना क्रिटिकल है आपके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट या नहीं है, और यूजर्स अगर उसको कहीं यूज कर रहे हैं या नहीं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिटिकल है लेकिन ऑलरेडी 1,000 सॉल्यूशंस हैं, तो फिर आपको फिगर आउट करना होगा कि मैं उनसे अलग क्यों. True. So the next question says, how should startups approach hiring when transition from a small team to a larger organizations? देखो, सबसे पहले तो स्मॉल टीम ही आपकी बिल्ड जो होती है ना, आप एक एक जर्नी होती है 0 to 1 की, ठीक है, जहाँ पे आप बिल्कुल आइडिया से स्टार्ट करते हो, एक स्मॉल टीम बनाते हो. वो जर्नी जो होगी और उसमें जो लोग होंगे, ठीक है, उनकी जो स्किल सेट होगी वो बहुत अलग होगी, और जो 1 से 10 जो होती है ना, उसकी स्किल सेट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट. Completely different. For example, somebody who has worked with typical startup, small startup, they are mostly generalist in my word. वो सब कुछ जानते हैं, उनको ऑपरेशंस भी आता है, उनको प्रोडक्ट भी आता है, उनको मार्केटिंग भी आता है, ठीक है. बट वो 50-60, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट वो 50-60% जानते हैं, वो 100% वो दे आर नॉट मास्टर्स इन एवरीथिंग. सो इट्स लाइक दे आर जनरलिस्ट. बट जब आप 1 से 10 की जर्नी करते हो तो you don't need journalist at that point of time. You need journalist, right? But for each specific function, you need a specialist person to lead that. अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, राइट, अब आपका जो जर्नलिस्ट है उसने अभी तक मार्केटिंग की थी, वो सोशल मीडिया देखता था, वो डिजिटल मार्केटिंग देखता था, सब कुछ देखता था, बट एसईओ करता था. लेकिन अब जब आप 1 to 10 की जर्नी कर रहे हो तो यू नीड समबडी जिसने से फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का हैंडल किया. He will come with that experience, he will come with that sort of a confidence that yes,
how to utilize it, where to utilize, what all processes need to be set, because 0 to 1 में काफी सारी चीजें हैपेजेड होती हैं। आप मतलब आज कुछ कर रहे हो, कल कुछ कर रहे हो, जो एक जर्नलिस्ट कर सकता है, लेकिन जब आप 1 to 10 में जाते हो ना, तो आपको चीजों को स्टैंडर्डाइज करना होता है, आपको उनको प्रोसेसेस में कन्वर्ट करना होता है, वो एक स्पेशलिस्ट ही कर पाएगा। True. So they say, it is not that easy to go from 0 to 1, and then if you're up to 1, if you have a proper SOPs in place, then it becomes easier to go 1 to 10. Correct. Right. So the next question is like, how can entrepreneurs identify a unique value proposition in the competitive market, sir? मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा it's very vague, I would say, but exactly आप कहना क्या चाहते हो? If you can just type in here. Okay. So meanwhile, we'll take up one more question. Value proposition कैसे लेना है? I mean, when it comes to in the competitive market, how do you derive your value propositions? See, again, the value proposition could be like I told you, right? For us, the value prop was, in Dailylearn, right? It was more about working for the tier 3-4 market, right? Now tier 3-4 में भी आप जा रहे हो, तो you cannot compete in everything. आप नहीं बोलोगे कि ठीक है, मैं 10th को भी ऑनलाइन कोर्सेज दूंगा, 12th को भी दूंगा, मैं नीट भी करूंगा, JEE भी करूंगा. Then you will have to figure out what exactly you can do, what is feasible for you, what you are good at. For example, we had a tie-up with a company called Super 30. Super 30 is a coaching institute in Bihar. We thought that initially Dailylearn का कोर्स कोई नहीं खरीदेगा, तो we tied up with Super 30 and we started marketing ourselves, that it's a Dailylearn course powered by Super 30 teachers. Now when Super 30 teachers are onboarded, we are restricting ourselves to only JEE preparation, right? Nothing else. And then there we are now thinking कि ठीक है, अब JEE में हमारे पास 25-30 कॉम्पिटिटर्स हैं यूपी बिहार मार्केट को सर्व करने के लिए. हाउ टू कॉम्पीट अगेंस्ट देम, राइट? what kind of value prop we can have against those people, right? And Super 30 itself was a value prop because tier 3-4 audience, rural audience, that aligns well with the value which Super 30 teachers are giving to them. तो वो आपको सबसे पहले ऑडियंस जो है ना, कस्टमर आपका जो है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, यू विल हैव टू ड्रिल डाउन दैट एग्जैक्टली whom you are serving, right? And then you will have to do that competitive value prop analysis for the same. आप एक जनरलाइज कॉम्पिटिटिव वैल्यू प्रॉप नहीं बना सकते हो. नहीं बना सकते. True. Thank you so much, sir, for that. We'll take another couple of questions more. Sure. So the next question is, so what factors should be considered when forming a founding team? So like I told you, right? सबसे पहली चीज आपको उसका चेहरा पसंद हो. पसंद हो. वो vibe होनी चाहिए that yes, it's a positive vibe from this person. True. I want to spend next 5 years, 10 years, daily seeing this face. अगर कल को उसका चेहरा पसंद नहीं है, कल को कुछ बात भी कहता है, नॉर्मल चीज, राइट? कि कुछ he is actually having some good suggestion, but you will always be in a place of conflict कि नहीं, उसने बोला है तो मुझे इसको अपोज करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? और दूसरा, ऑलरेडी टोल्ड यू, इट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स. आई मीन व्हाटएवर यू आर बैड एट, द अदर पर्सन शुड बी गुड एट. Complementing skills. True. एंड इट्स नो सेम, मतलब आप अगर मार्केटिंग में, या यू आर very good in marketing but you are very bad in sales, I mean there are people like that, तो accept कर लो, have that other person completely handle sales, but then you should not be interfering much. मतलब once you decide कि हाँ sales ये इस person का ही job है, then you should not be poking your nose, if I may say. Okay, so we'll take one last question for the evening, sir. What are the risks of scaling too quickly and how can that be mitigated? So like I told you, right, कि you have my MVP and then you think कि MVP से हम सीधा 50 लाख customers को acquire कर लेते हैं, right? That's exactly the question कि that's Yes. the biggest risk, because MVP we explained कि MVP अभी भी उस stage में है जहाँ पे ये product नहीं है. MVP is basically a tool to gather more early user feedback और उसके बाद अपने product को अभी एक shape में लाना है. तो आपने उस stage पे अगर scale कर लिया, so the kind of feedbacks which you will start receiving will be extreme. Also, when you have 50 lakh customers acquired, MVP में आप एक certain set of audience के लिए वो product बना रहे थे, ठीक है? आप उस audience से दूर चले गए. वो जो 50 जो audience का जो set था, उनका जो overall persona था,
अब ये जो 50 लाख लोग आए हैं, दैट पर्सोना माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट, एंड देन यू इट विल ऑल्सो हैपन कि आप जो बनाना चाहते थे, आप जिनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, एंड द काइंड ऑफ फीडबैक विच इज actually coming, it's two different set of audience. So your initial thought process will actually digress. मतलब आप चलना चाहते थे दिल्ली और पहुंच गए आप मे बी कलकत्ता, वैसी हालत हो जाएगी. All right, sir. Thank you so much for such wonderful information. I would say I'm sure this has made a lot of impact, and we have understood in a very simple way. That's very important. As you rightly mentioned in the beginning, you said you'll not use jargons, and everything was made very simple. Thank you so much, Mr. Kunal, for joining us. Sure. And it's our privilege that you have been with us today. So heartfelt gratitude on behalf of the entire GIBS team. Thank you so much. And I would also love to extend my gratitude to all the participants who have been through in this IRE talks, and looking forward for many such more amazing speakers lined up for you to understand more on various aspects of innovation, research, and entrepreneurship from the GIBS Business School. Right. So, Kunal ji, I would also suggest कि अगर जब भी आप Bangalore में आए, we would love to host you at the campus as well. I'm sir. based out of Bangalore, so we'll speak. Oh, nice. So in that case, probably we'll catch up very Sure. soon. Right. Thank you so much. And I would request, in case I understand there were a lot of questions, but since we could not take all of them, in case if you have any other doubts, any queries, I'm sure you can reach Mr. Kunal on LinkedIn. So probably he'll surely try to help you out with your business information or whatever the startups you need to understand on. I'm sure sir will be able to help you on that. Sure. Right. Thank you so much, Kunal ji, for joining us. Thanks, Sandeep. Thank you everyone for joining us. Thanks to the entire GIBS team. Thank you so much, sir. Thank you so much.